So, hi friends, this is Vasudev Panda. Welcome to Master of English, the class Ethics and Values. We are in 16th class, 16 number class रे हमें पहुंच चुके आसंता काली I think so if I'll have time we'll complete the book. आसंता काली बही सरीबो Ethics and Values, आर्ट साइंस कमर्स सब पिला मानक पई सब सेमिस्टर रे पढ़िबा तो प्रथम सेमिस्टर सरला परे हमें द्वितीय सेमिस्टर स्टार्ट करबा. We'll start the second semester books. Yeah. So आदिर क्लास होची विचक्राफ्ट एप्रिहेंशन एंड इंड्यूस्ड मर्डर. विचक्राफ्ट कहले गुणिया शुणी थिबा हमें बहुत स्त्री मान को संदेह करा जाए गुणिया संदेह हत्या ये भलिया जो जिनस सब अच्छी ये जिनस को रिगार्डिंग हमरो जो स्त्री मान को ऊपर यार कंडीशन कौन व्हाट्स हैपनिंग टू वुमेन बाय दिस पर्टिकुलर थिंग से जिनस रे पढ़िबा. So in the era of science and technology, people believe in reality. विज्ञान एवं प्रजुक्ति विद्यार जुग एकविंश शताब्दी रे आमे समस्ते बंचुचे समस्ते आमे अच्छे एतरे and but there are people who still believe in witchcraft. एबे भी लोक अछंती जो माने witchcraft ऊपर विश्वास करंती जाको आमे गुणिया बा जादू विद्या बोली कहूचे पिले सेतरे एबे भी लोक अछंती जो माने विश्वास करंती. एंड लैक ऑफ एजुकेशन व्हाई दे बिलीव प्रश्न उठे व्हाई डू दे बिलीव इन सच टाइप ऑफ थिंग्स नाउअडेज एबे भी काहे की विश्वास करचंती. यदि यही प्रश्नर उत्तर तुम खोजुच ताले द रीजन इज वेरी क्लियर. लैक ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ एजुकेशन शिक्षार अभाव नहीं. सेकंड थिंग इग्नोरेंस जानि न थांती किछि इग्नोरेंस. थर्ड थिंग ट्रेडिशनल बिलीफ प्रथा परंपरागत विश्वास ट्रेडिशनल बिलीफ. अकाउंट्स ऑफ पीपल्स फेथ इन विचक्राफ्ट लोक मानकर विश्वास जे गुड़िया आसिले भलो कर दबो नहीं. सो दे एट्रिब्यूट एवरी मिसहैप टू द प्रैक्टिस ऑफ विचक्राफ्ट एंड व्हाटएवर हैड हैपेंस चा भी गटे जे मानक सहित से माने सब जिंस को जादू टोना दृष्टि गुणिया मानक दृष्टि प्रथम देखते एवं इंटेरियर एरिया मानक. एंड मेन नॉर्मली ब्रांड मेन एस डाकन्स डाकिनी जाको कहूचे हमें तो स्त्री मान को डाकन्स बोली की कह जाउछे. वुमेन एज डाकन्स डीप रूटेड सुपरस्टिशंस एंड सिस्टम बिल्ट ऑन प्रेजुडिसेस एंड पैट्रियार्की लीड मैन टू पुट द ब्लेम ऑन वुमेन. एबे भी स्त्री मान को सबु दोष दिया जाउछि. स्टिल आम एकविंश शताब्दी रे बंचुछे. तापर आइला पिले 2 नंबर जिनस होची एसिड थ्रोइंग एसिड फिंगा जो घटना सब घटुची तमे से सब भी देखुथिबो. एंड एसिड थ्रोइंग इज अ वायलेंट असल्ट ऑन वुमेन. इट इज ए वायलेंट असल्ट हिंस्र आचरण जहाँ कहवा हिंस्र व्यवहार स्त्री मान के प्रति वुमेन aggrieved when through acid and women girls faces or onto their body and the men who were aggrieved who were aggressive what did they do ସେମାନେ कौन कले men through acid on women's and girls faces झियो किंबा स्त्री मानक मुह ऊपर को एसिड पकई दौरान and to their body even if and to their body they do this with the intention of disfiguring them. And what is the intention behind this? Then why they are throwing acid to women or girl? The reason is very clear, obvious. They want to disfigure them. से माने ताको विकृत करिबा पई चाहते से झियो किंबा स्त्री को विकृत करिबा पई चाहते and inflicting physical pain on them or killing them even if they wanted to inflict them physical pain on them or killing them. से मान को शारीरिक भाव कष्ट दवाई इवन इफ हत्या करने भी एसिड फिंगा होता है. एंड ऑफ दिस अटैक्स थ्रो कोरोसिव लिक्विड्स एट द विक्टिम्स. सो व्हाट डिड दे थ्रो देन कोरोसिव लिक्विड ताको कहा जाए जो एसिड टा फिंगा जाए दैट्स कॉल्ड कोरोसिव एसिड इन द सेंस दैट कैन मेल्ट द ह्यूमन स्किन दैट कैन क्रिएट वुंड्स ऑन ह्यूमन स्किन्स. द एसिड बर्न्स वुमेन जो मैंने एसिड रे जली जानती द एसिड बर्न्स वुमेन एंड डैमेज देयर स्किन टिश्यूज. एसिड कौन करे से मान को जलाई थी बर्न्स थे एंड बर्न्स देयर स्किन टिश्यू से मान कर चमड़ा भी जली जाई था. and acid attacks lead to dissolving of the bones and permanent blindness even if it can dissolve the bones of women. हाड़ भी तरली जाए था हाड़ भी भांगी जाए था किसी केस में हैं and
it can cause permanent blindness. किसी किसी छुआ अछंती किसी स्त्री झील अछंती जो माने परमानेंटली ब्लाइंड हो जाते परमानेंटली blind हो जाते. So girls and women are the usual victims of such assault, and maximum acid attack cases you can see there is no sign of men. The victims are women and girl. झील माने एवं स्त्री माने यार माने शिकार ही थामते. Attacked over domestic, and the victims are attacked over domestic and land disputes. And why did this happen? What is the reason behind throwing etc. 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 डोमेस्टिक और लैंड डिस्प्यूट घरोई समस्या थी पारे लैंड डिस्प्यूट थी पारे रिजेक्टेड मैरिज प्रपोजल थी पारे बाहागर जो भांगी जाए कि कौन झील कौन पुअर प्रपोजल को प्रत्याख्यान करे और रिजेक्टेड इवन इफ रिजेक्टेड सेक्सुअल एडवांसेस आर आल्सो देयर when somebody ask for sex and he or she disobey that at that time acid is being thrown to them. So acid attacks traumatize their victims. Acid attack traumatize the victims. Acid attack द्वारा कण हुए से मानसिक भाव शारीरिक भाव क्षतिग्रस्त होता है जहाँ ऊपर को फिंगा जाए. An acid attack changes the entire life course of the victim and it can change the life course of a victim. जी से दंड पाए से एसिड अटैक शिकार हुए तार जीवन चर्चा परिवर्तन हो जाए. पिले पिले एडमिशन पर जदि एते क्वेश्चन अच्छे एडमिशन रिगार्डिंग गोटे लाइव करवा ए क्लास पर लाइव करवा सेठी एडमिशन रिलेटेड क्वेश्चन जार अच्छी पचार. ठीक अच्छे आई विल बी देयर. ठीक अच्छे आई विल बी देयर डोंट वरी. सो एन एसिड अटैक चेंजेस द एंटायर लाइफ कोर्स ऑफ द विक्टिम. And most survivors of an acid attack are forced to give up their studies. And most of them who survive of acid attack, जो माने कौन करमती acid attack रो survive करमती जो माने those who survived, they forced to give up their studies. से माने पाठ पढ़िवा पाई पाठ को छाड़िवा पाई they are forced. से माने बाध्य होते. Their occupations and other important activities, not only studies, even if they left their occupation and other activities, whatever they are involved with, जो एक्टिविटी सहित से जड़ित होती से जिनस छाड़ापी से बाध्य होती. वन टाइप ऑफ दे आर फोर्स्ड. द विक्टिम्स आर नेवर एबल टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड आफ्टर गेटिंग एसिड अटैक the victims whoever it may be victims a girl a woman a teenager or whoever it may be they never again they never lead a normal life. से माने साधारण जीवन यापन करवा तांका पाखरे कष्ट हो जाई थाए. Then the next thing is body shaming. छुआ मानकर झील मानकर स्त्री मानकर बॉडी को नहीं कि जो कमेंट हुए पिले दैट इज कॉल्ड बॉडी शेमिंग. So body shaming refers to the practice of passing humiliating remarks on the shape or size of another person's or body. Getting me? So what happens? Body shaming is what it is refers to the practice of passing humiliating remarks. खराब मंतव्य दवा humiliating remarks on the shape or size of another human's body. अन्य जड़े मनुष्यर बॉडी रो आकार शरीर रो आकृति शरीर रो रंग को नहीं कि जिते खराब कमेंट दिया जाए that is called body shaming. And it is a form of bullying. Bullying कहले गाली करवा पिले. It is a form of bullying that can result in severe emotional trauma. Severe emotional trauma. माने मानसिक भाव रे बहुत क्षतिग्रस्त होता मानसिक आवेग क्षति घटे. Body shaming is done by parents and this body shaming is not you can tell only it happens by other people. It even if occurred with the parents, siblings and friends and meets schoolmates often portrayed in India. And in India if you look at those things जदि भारत रे हमें देखिबा it can be what occurred with by parents, siblings, friends and meets schoolmates and often portrayed in media and the media. Men and women, boys and girl experience body shaming. Men and women, boys and girl, both the gender, they experience such type of things that is called body shaming. However, our media, movies and daily interactions body shame girls more frequently than the body shame boys. But the question arises here, who is more vulnerable? Who is more exposed to this particular thing? Then the name of girl is spontaneous arises. बेसी किए प्रभावित होते जो प्रश्न उठे से झील मान ना स्पंटानियस स्वतः प्रवृत्त भाव में
ଆସିଥାଏ ପିଲେ girls more frequently than the Badisham boys. The media commonly portrays overweight characters as pots of jokes in a show or engage in dispensing fat jokes. Our literature and folk songs are still body shaming, especially tending girls for the size, height, and the complexion of their bodies. And especially when we'll talk about girls, especially and how the body shaming is passed to girls, then tending girls for the size, height, and complexion. Look at these three things. These three are the most important sector while the question of body shaming is raised up. What are those? First one is size, then height and complexion. So kola, gora, dengi, bangara, ये जो कथा है मोटी. So these are the comments that are being faced, and these particular comments are being made after watching the body of a particular girl or particular woman. So this was all about body shaming, and the next thing is sex trafficking. Sex trafficking. Sex trafficking is the largest growing commercial enterprise carried out in many nations. Sex trafficking is the largest growing commercial enterprises. आजिकाली गोटे बड़ व्यवसाय हो जाए पिले carried out in many nations, not only in India, it do offense in maximum nations of the world. Women are taken and are sold off. झील मान को प्रलोभन दे कि निया जाए, बिक्री कर दिया जाए, जाको हमें सेक्स ट्रैफिकिंग बोली कहूचे. They are used to mint for money some people who manage to keep them in a state of slavery. Even if some people are there, किसी लोग अछंती जो माने सेमान को कृतदासी करके रखी थंते, कृतदासी करके रखी थंते, and force, fraud, and coercion, manipulation, and false promises are used to capture girls, and women are commercial use, and they are forced, they are proudly taken, then manipulated, and false promises are being given to them. False promise माने मिछ प्रतिश्रुति दिया जाए से माननको तुमको अमको कर देबु, समको कर देबु, तुम पे ए व्यवस्था कर देबु, ए व्यवस्था करिकी झियो माननको फुसले कि निया जाए आउ से माननको सेक्स ट्रैफिकिंग रे शामिल कर दिया जाए पिले. And the International Labour Organization estimate that women and girls make up 98% of sex trafficking victims. And in comparison to men, if you look at the report being given by the International Labour Organization, it estimates that women and girls make up 98% of sex trafficking. 98% of sex trafficking. Shantanu Kumar Nath, 25 marks in all semesters. 6 semesters, 6 books are there. So today's last unit is there, violence against women in custody. Custody कहले थाना भितरे, police station भितरे जो problem टा हुए पिले एटा काली last class काली हमें सारीबा last class रे सॉरी जीव काली आसंता काली सॉरी जीव ethics and values तापरे EVS देखिबा try करिबा EVS plus करिबा पे. Then prisons are not violence free zones. Prisons कहले कौन बंदी गृह. Prisons are not violence free zones. Even if prisons कहले बंदीशाला बा जेल सीए भी violence free zones नु हो पिले and prisoner experience violence during their stay in prison. जते बड़े से माने जेल भीतर रहमते, prison रे रहमते से भीतरे भी से माने कौन करमते experience violence सेठी भी से माने को हिंसार शिकार होबा पई पड़ी थाए. While male prisoners are vulnerable to physical violence, male prisoners are vulnerable to physical violence. They are exposed to physical violence. ସେମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଏ କାହାକୁ ପୁରୁଷ କଏଦୀ ମାନଙ୍କୁ. Women prisoners become susceptible to sexual violence while the women while they are staying inside the prison they are exposed to sexual violence. Getting me? Women prisoners become susceptible to sexual violence. It's, women are often coerced into providing sex in return of favor, and they are forced to provide sex in return of favor. तांको दया देखेगा पे सेमानकु माने विभिन्न कारण देखे कि सेमानकु सेक्सुअली हरेस्ट करा जाए इनसाइड द प्रिजन. Such as extra food, personal hygiene products, opportunity to meet their relatives' skin, or to avoid punishment. And there may be various reasons. Various grounds are there, like they are being told that you'll be provided extra food if you'll sexually help me, or hygiene products will be given to you, opportunity to meet your relatives will be given, and also your punishment will be deducted, etc. This type of things are being shown to them.
प्रलोभन दिया जाए ये भाया कथा कहीकि टू प्रोवाइड सेक्स टू दोज पीपल हु आर इनसाइड द जेल. These cases of custodial rape which occurred in quick succession in India. इंडिया रे स्पेशली ये भाया तीन घटना घटी. एक हूँ मथुरा केस इन महाराष्ट्र इन 1974, देन रमीजा बी इन आंध्र प्रदेश इन 1978 एंड माया त्यागी इन उत्तर प्रदेश इन 1980. 1980 मसीह गोटे केस, 1978 मसीह गोटे केस, 1974 मसीह तीन डिफरेंट स्टेट रे ये सब घटना घटी. एंड मूव्ड वुमेन एक्टिविस्ट इन इंडिया टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट कस्टोडियल रेप इन द लेट 1970 टू 1980. 1970 ରୁ 1980 मसीहा भितर वुमेन माने ये भाया घटना जो घटला दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट कस्टोडियल रेप. तो ये थिला पिले तुमर कौन माने आउ जोड़े क्लास हबर पिले आउ दुईटा क्लास रे आमे सारिबा. दुईटा क्लास आउ जीव तो काली सरीबो मु भाबुतली काली सरीबो नाही. एटलिस्ट वी नीड 2 मोर क्लासेस टू कंप्लीट माने 18 नंबर क्लास रे सरीबो. तो आज पे एतिकी सी यू टुमोरो इफ आई लेव टाइम. जदि टाइम हुए मु निश्चित भावे काली क्लास करी ना परदिन क्लास करवाटा कंपलसरी. ठीक अच्छे. आउ कौन कहते यस एग्जाम रिलेटेड जो मान क्वेश्चन अच्छी आउ टिके पर आई विल बी देयर to answer your questions. See you there. Stay tuned, Master of English. Bye bye.